Value of a firm in the presence of income tax, module 216, financial management. In the last module, we talked about the value of a firm in the presence of corporate individual taxes. हमने ये बात कही थी कि अगर कॉरपोरेट और इंडिविजुअल टैक्सेस मौजूद होंगे जिनको हमने इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया है, तो उस केस के अंदर दोनों फर्म्स की वैल्यू, यानी एक फर्म जो लीवर्ड है और दूसरी फर्म जो अनलीवर्ड है, यानी एक फर्म जिसके पास डेट है और दूसरी फर्म जिसके पास डेट नहीं है, इनकी वैल्यू बराबर नहीं होगी. Now in this slide let's have a look at what is the value of a levered firm, यानी एक ऐसी फर्म जिसके पास डेट कंपोनेंट मौजूद है, उसकी वैल्यू उस फर्म के मुकाबले में कैसी है जिसके पास के डेट मौजूद नहीं है. उस फर्म को हम अनलीवर्ड फर्म कहते हैं, यानी जिसके पास डेट कंपोनेंट नहीं है. So you can see in the formula that the value of levered firm is actually the sum of the value of unlevered firm and the tax shield benefit. तो जाहिर है अगर टैक्स शील्ड बेनिफिट अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू में मिलकर लीवर्ड फर्म की वैल्यू बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म हमेशा अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू से ज़्यादा होगी. So again this statement is against the argument of Miller and Modigliani's irrelevance theory. For example, if we have a look at the slide again and we say that the value of an unlevered firm is 500,000 rupees and the value of tax shield is 150,000, then the value of levered firm will be 650,000. And 650,000 is certainly more than 500,000. The second point which is important in this equation is the amount of tax shield. Now let's see that how would we calculate this tax shield. We can calculate the tax shield either by taking the product of the debt and the tax rate or by dividing the tax saving with the discount rate, that is the interest rate. So let's have a look at the first formula, and that is the tax shield benefit is equal to debt multiplied by the income tax rate. So suppose if the debt amount is 500,000 and the tax rate at the moment applicable is 30%, then the tax shield benefit will be equal to 150,000. Now the other formula that we can use to calculate the tax shield benefit is by first calculating the tax saving, the amount that we'll save in case of leverage, in case of debt, and we divide it by the discount rate, which is the interest rate, and again you can see that you will get the same amount of tax shield benefit. तो हम इन सारे फॉर्मूलाज को सामने रखते हुए ये कह सकते हैं कि मिलर एंड मोडिगिलियानी का आर्ग्यूमेंट अगर इनकम टैक्स अप्लाई ना होते हों तो ही ठीक है, लेकिन अगर इनकम टैक्स अप्लाई होंगे तो हमेशा लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म के मुकाबले में ज़्यादा होगी. एंड द वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म is calculated by adding the value of unlevered firm and the tax benefit or the tax shield. Finally, the calculation of tax shield is either by multiplying the amount of debt with the tax rate or by dividing the tax savings with the discount rate.